look up here. I'm going to read the question for you. What he's saying, this phenylamine, it has changed into diazonium chloride. So it means what the reagents we should use, we use NaNO2 plus HCl. Okay, did you get it? This is the reagent we used, and I told you that these two things, they are going to form HNO2 plus HCl. So basically these things they react, but as a reagent we use both of them. Why? Because nitrous acid it is unstable at room temperature. So that is why, my dear student, we wrote this one. Okay. The next thing, this is the phenylamine. Phenylamine, when it reacts with the aqueous bromine, I told you that this nitrogen has delocalized its lone pair to the benzene ring, due to which reactivity of the benzene has increased. So when you react it with the aqueous bromine, so what would happen? This is the NH2. Okay. So the three bromine atoms, they will be attached with the bromine like that. Okay. So this one 2,4,6 tribromophenylamine. Okay, this one diazonium chloride, and this is the other thing I told you. When the diazonium chloride reacts with another benzene group, it forms the di. So how the di is being formed? Make the diazonium chloride like that, benzene and double bond N, and this one would attach with this. Okay, like that, and this is O minus and Na positive. So this whole thing form the di, which is called as the diazonium chloride coupling reaction with the other things. Did you get it? Yeah. Did you get it, beta? Yes, sir. Have a look at this question, please. Question number 3. In question number 3, this benzene has changed into nitrobenzene. Okay, so this in this reaction we use nitric acid with concentrated sulfuric acid as a catalyst. So this thing, my dear, that is the reagent, and this thing, that is the condition. Okay, and 55 degrees Celsius, that is the temperature. In the reaction 4, if you look, NO2 that has been changed into NH2. So this one tin plus concentrated HCl. Reduction. Okay. He's asking you about the reagents and condition. Next step, he's asking you about the other things. Sorry, भाई नहीं, बेंजीन के साथ जब NO2 NH2 में चेंज करें तो 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, बताया नहीं है, इसमें कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं बट सर. Okay, so the type of reaction he is asking. In the third step, benzene always undergo electrophilic substitution. So this is the electrophilic substitution. Okay. And in the next step, reaction 4, my dear, that is actually the reduction reaction. Okay, everyone got it, beta? Okay, now move towards the next thing. He's asking you, suggest a reagent that could be used to distinguish between phenylamine and hexylamine. So hexylamine is this one. Hexylamine is single bond with NH2. Okay. No, sorry, this is not cyclohexylamine. I'm sorry. This is phenylamine. Okay. And what is hexylamine? The 6 carbon chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and NH2. So this is, my dear, hexylamine. Okay. So how could you distinguish between phenylamine and hexylamine? The method is very simple. If you add aqueous bromine inside the phenylamine, the white precipitate are formed. So here you should write aqueous bromine added with phenylamine, white PPT are formed because bromine would be attached on position 2, 4, and 6. Okay, so white PPT are formed. I told you phenylamine, when you react it with the aqueous bromine, it is going to attach on the position 4 and 6.
Okay guys, now move towards the next question. अब ये दो चीजें देखने में लग रही हैं जैसे बड़ी खतरनाक सी हैं, but they are very simple. He's gonna ask you different questions from it. ठीक है जी. ये देखें जी, ये बी पार्ट में वो तुम्हें क्या कह रहा है? सर जी जी बेटा. सर मैंने पूछा था हेक्साइलमाइन के साथ क्या प्रेसिपिटेट आएगा? उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि एक्वस ब्रोमीन हेक्साइलमाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी या ओके सर, ठीक हो गया। भाई बेंजीन के साथ तो एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट करके पोजीशन 2 4 6 पे लग जाती है ना, तो यू आर गोइंग टू गेट द वाइट प्रेसिपिटेट, बट विद हेक्साइलमाइन नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस. हेक्साइलमाइन इज ओनली बेसिक ग्रुप, तो बेस जो है सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करती है, दैट्स इट. ओके. ठीक हो गया सर, समझ लग गई। ओके गाइस, हैव अ लुक अप हियर. यहाँ पे उसने दो कंपाउंड्स आपको ऊपर दिए हुए हैं. ही इज सेइंग reagent X react with L2PA and with vanillin. So you have to find out a compound which can react both of the compounds. The first one is L2PA, and this is vanillin. So he is saying that reagent X can react with both of the substance. तो दोनों में क्या चीज exactly same है? Both are having the phenolic group. Phenolic group. तो फिनोलिक ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, उसमें सोडियम डालेंगे तो फिक्स करेगी. ठीक है जी. ये भी रिएक्शन हो सकता है, या एक्वस ब्रोमीन डालें वाइट प्रेसिपिटेट दोनों बना देंगे, ये भी हो सकता है. ठीक है जी. तो दोनों में से कोई एक लिख दो. यानी अगर तुम लोग सोडियम लिखोगे, सोडियम, तो फिर तुम्हें इसका क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे O माइनस Na पॉजिटिव, और इधर भी O माइनस Na पॉजिटिव, और ये भी फिनोल है तो O माइनस Na पॉजिटिव. ठीक है. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है. तो ये बी CO2 और Na पॉजिटिव, और तो इसमें कोई नहीं है, नहीं. तो दोनों सोडियम के साथ फिक्स करेंगे, दोनों का सोडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगा. या तो ये लिख दो और प्रोडक्ट ये बना दो. यहाँ पे अगर एक्वस ब्रोमीन के साथ लिखते हो तो भाई इसकी पोजीशन 2 और इसके लिहाज से पोजीशन 2, ये ब्रोमीन लगा दो. इसके लिहाज से पोजीशन 2 और 4 पे लगा हुआ है और 6 पे भी लगा हुआ है, तो ब्रोमीन लगा दो. तो बोथ ऑफ देम दे विल फॉर्म द वाइट प्रेसिपिटेट विद एक्वस ब्रोमीन. तो ये भी लिख सकते हैं. डिड यू गेट इट? यस. यस या डिड यू गेट इट बेटा? यस सर। Okay, the next reagent he is saying reagent Y react with L2PA but not with vanillin. So we have to check L2PA के साथ reaction हो रहा है, vanillin does not react. So if you see L2PA has got carboxylic acid. Carboxylic acid can react with the metal carbonate. So if you add sodium carbonate inside it, so this one would react, okay, and form the effervescence. But this one does not have the carboxylic acid group, so it won't react with sodium carbonate. So sodium carbonate does not react with it. फिर नेक्स्ट रिएजेंट वो आपको कह रहा है कि वेनिलीन करता है और ये नहीं करता, तो इसमें देखिए एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है. तो इसमें आप इसका जो है वो 2,4-DNPH वाला टेस्ट कर देंगे. ठीक है. या सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट वाला या फैलिंग सॉल्यूशन वाला कोई भी लिखते हैं, क्योंकि दिस वन कुड रिएक्ट विद द टॉलरेंस रिएजेंट विद द 2,4-DNPH ट्राइहाइड्रोमीथेन. इस पे नहीं लग रहा भाई, कहां पे लग रहा है? For triiodomethane you got CH3 and C double bond O. So here you got CH3O only. Okay. तो LD इस पे 2,4-DNPH भी लग सकता है. ओके. और इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, जब 2,4-DNPH के साथ भी कर सकते हो, या फिर इसको जो है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ भी कर सकते हो. तो टोलेंस रिएजेंट से करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पे चेंज हो जाएगा. ये बस ये बना दो. और दिस वन won't react with the टोलन रिएजेंट. पैनिंग सॉल्यूशन भी चल जाएगा और उसमें वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. डिड यू गेट इट बॉय? या यस सर। Okay, now move towards the next question. Have a look up here. This is the next question. ये functional group है. Okay, now he is asking you in the table complete the structure of each of the compound formed when metho oxide amine is reacted with the following reagent LiAlH4. LiAlH4 is a reducing agent. तो ये किस किस चीज की रिडक्शन कर सकती है? एल्डिहाइड कीटोन की कर सकती है. तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी
यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इधर H लग जाएगा और इधर H ऑटोमेटिकली है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको आप कैसे बना देंगे माय डियर? हियर वी वुड मेक द OH, ओके, और यहाँ पे जो है वो क्या जुड़ा हुआ था, चेक कर लो। बाकी चीज वैसी की वैसी बना दो यार, NH और CH2 है, तो इसको ऐसे बना दो, ये इसको इस तरह बना देंगे OH और ये NH CH2 एंड CH3, और ये रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन है। Did you get it? Now in the next one he is going to say about HCl. तो HCl के साथ जो है वो रिएक्शन आपने करवाना है। तो with HCl what would happen? Have a look up here. With HCl, HCl is an acid, so acid can react with the basic group. So this is the basic group I told you last time. So what would happen up here? NH2 positive and Cl minus. So this one you could write up here. Okay, तो उसको draw कर दें, वहां पे बाकी कुछ भी नहीं होगा. So with HCl, so you should form this thing exactly same, and this one got NH2 positive, Cl minus, and here you got CH2 and CH3, and this reaction is neutralization reaction. Did you get it, guys? Yes. आज बाकी को नहीं आया यार, आज टाइप है। ओके, द नेक्स्ट वन इज CH3COCl। तो CH3COCl में क्या होगा ये देखेंगे, NH CH2 and CH3. So this acyl chloride, what does it do? It is going to attack on its CH3COCl. So Cl from here, H from here, they are going to form HCl. तो उसको उसके साथ ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, NC double bond O and CH3, and here you got CH2 CH3 and here you got C double bond O. ये लीजिए, ये बन गया। एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन जो एसाइल क्लोराइड के, इनमें आपकी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है या न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन भी होती है, दोनों लिखते हैं इसमें। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यू कैन राइट इट एज न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखें। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, this is having the 2 carbon, but here we got 3 carbon. So 1 carbon का इजाफा हो गया। What does it mean? We should react it with the KCN in ethanol. Okay, and the bromine that would be replaced by the CN group. Okay, and then this CN has been changed into CH2NH2. So you can use NaBH4 or LiNH4 or H2 in the presence of nickel or platinum as a catalyst. So this carbon is having 2 hydrogen and this nitrogen is having the 2 hydrogen. तो ये आपका जो है ये बन गया। Did you get it? So all the questions are guys very easy. You just have to use your brain. अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगा, एक्वस ब्रोमीन है, सो द अमाइन ग्रुप जो है ये इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है। ब्रोमीन वुड बी अटैच्ड ऑन पोजीशन 2, 4 एंड 6, तो 4 ऑक्यूपाई है, तो ये बना दो। ये CH3COCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो व्हाट वुड हैपन, यू विल गेट NH C double bond O and CH3 and here Cl that is attached, और ये वाला OH minus that is an alkali। तो alkali जो है भाई, ना तो Cl को कुछ कर सकती है और ना ही NH2 को कुछ कर सकती है, तो no reaction। and here you got NaNO2 और HCl that to form the amine into disonium chloride। तो यहाँ पे disonium chloride आप बना दो, ये Cl and this is N2 positive and Cl minus। Did you get it? ये 12